Hello everyone, this is Sanjeev Shrivastava. Today I am going to discuss about the chemistry of lanthanides. Okay, so students, you know very well that all the elements of the periodic table are divided into four blocks: S block, P block, D block and F block. All the elements in which the outermost electron enter in the S subshell are called S block elements. All the elements in which the outermost electron enter in the P subshell are called P block elements. These elements are also called representative elements because their only outermost shells are incomplete. Okay, and the elements in which the outermost electron enter in the D subshell and their outermost two shells will be incomplete. Okay, last electron enter in the n-1 D subshell, then these elements are called D block elements. These elements are also called transition elements because they are situated between S block and P block and their properties are intermediate between S block and P block. That is why they are called transition elements. Okay. Now for the case of F block element, all the elements in which outermost electron enter in the F subshell and their outermost outermost three shells will be incomplete are called F block elements. Okay, these elements are divided into two series: first inner transition series and second inner transition series. A group of 15 elements from lanthanum 57 to lutetium 71 are called lanthanides or first inner transition series elements. Okay, a group of 15 elements from lanthanum 57 to lutetium 71 are called lanthanides. In this case, the outermost electron enter in the 4f subshell. Similarly, the second inner transition series, a group of 15 elements from actinium 89 to lawrencium 103 are called actinides or second inner transition series elements. In this case, the last electron enter in the 5f subshell. Okay, so all the F block elements are divided into two classes, lanthanides and actinides. Okay, now let us discuss about the electronic configuration of the lanthanides, oxidation state of lanthanides and lanthanide contraction. Basically we focus upon the lanthanides. Okay, first of all we have to discuss about the electronic configuration of the lanthanides. Actually the electronic configuration of the F block elements is n-2 F1 to 14 n-1 D 0,1 and ns2. This is the general electronic configuration of the F block element. This is the last shell, before last shell and third before test. n-2, n-1 and ns. Three shells are incomplete for the case of F block elements. Okay. Now what is the electronic configuration of the lanthanides? Okay. I am giving you a basic trick to write the electronic configuration of the lanthanides. First of all, in the outermost shell, every element has 2 electrons in the 6s2. 6s2 में कितने electrons आपके पास है? 2 electrons है. Lanthanides, there are 15 elements: lanthanum 57, cerium, praseodymium, neodymium, promethium, samarium, europium, gadolinium. From lanthanum to gadolinium, these are called lighter lanthanides. ये थोड़े हल्के होते हैं. And then terbium to lutetium, they are called heavier lanthanides. Okay बेटा. Now about the electronic configuration. सबसे पहले हमने एक देखो आपको एक ट्रिक बता रहे हैं लिखने के लिए. सबसे पहले हम इसको एक जनरल वे में लिख रहे हैं, फिर इसमें क्या मॉडिफिकेशन करेंगे फिर आपको ये बताते हैं. देखिए जीनोन एटॉमिक नंबर 54 हो गया, ठीक है. देन 4f, देन 5d, देन 6s2. 6s2 में हर बार 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, चाहे वो कोई भी एलिमेंट लैंथेनाइड्स का हो. हर बार आउटर मोस्ट शेल में
2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर होंगे। ठीक है, तो एक एक करके ग्रेजुअली हम यहाँ पर F में एक इलेक्ट्रॉन को बढ़ा रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 14 के बाद आएगा नहीं तो यहाँ बढ़ जाएगा। 14 के बाद 5d1। याद रखिए हमेशा F0 empty, F7 half filled and F14. These subshells are very stable. You know very well that empty, half filled and full filled subshells are most stable. तो जब यहाँ पर F0 या F7 या F14 की सिमेट्री डिस्टर्ब होगी तो आप एक इलेक्ट्रॉन इसका डी सबशेल में ट्रांसफर कर दीजिएगा। जैसे यहाँ पर 4f0 इज मोस्ट स्टेबल, तो इस केस में हम 0 मेंटेन करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शिफ्ट कर दें तो 5f कितना हो जाएगा 0 एंड ये 5d1 हो गया। बाकी सब एज इट इज 4f2 5d 0, 4f3 5d 0, 4f4 5d 0, 4f5 5d 0, 4f6 5d 0, 4f7 5d 0। फिर देखो 4f7 को डिस्टर्ब कर रहे हैं, हाफ फील्ड सबसेल को डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो इस केस में यहाँ हम 7 ही रहने देंगे और एक इलेक्ट्रॉन 5d में यहाँ पर क्या कर दिया, शिफ्ट कर दिया। बाकी फिर वही आगे बढ़ रहा है 4f9 5d 0, 4f10 5d 0, 4f11 5d 0, 4f12 5d 0, 4f13 5d 0, 4f14 5d 0। अब 14 तो फिल हो गया, 14 ही आते हैं इसमें, देन 5d1। तो आपने क्या देखा यहाँ पर इस केस में 5d1 आया है एक जगह पर और एक यहाँ पर 5d1 इस केस में आया है और एक जगह यहाँ पर आया है। तो जनरली जो डी सबशेल्स हैं उनमें 0 इलेक्ट्रॉन्स हैं, मगर इन 3 केसेस में डी के पास 1 इलेक्ट्रॉन है। तो हम जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो लेंथेनाइड्स का लिख देते हैं वो क्या लिखते हैं, लेंथेनाइड्स का जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं ज़ीनॉन 4f 1 to 14 5d 0,1 and 6s2. This is the general electronic configuration of the lanthanides. Okay. Now we have to discuss about the oxidation state of the lanthanides. Oxidation state of lanthanide exists between +2 to +4, in which +3 oxidation state will be most stable. Every element of lanthanide possesses +3 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑलवेज। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है इस केस में कि कुछ एलिमेंट्स +2 और +3 भी शो करते हैं। यहाँ पर +3 +4 शो करता है, ये एलिमेंट भी +3 +4 शो करता है, ये +2 +3 +4 शो करता है। ठीक है, ये आपका +3 +4 शो करता है। ऐसे सारे एलिमेंट्स +2 to +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, लेकिन सारे एलिमेंट +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो ही करते हैं। दिस इज द मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द लैंथेनाइड्स। ऐसा क्यों होता है? दे ऑलवेज लूजेस फ्रॉम द 6s सबशेल, 2 electrons loses from the 6s subshell. Then after they lose the electron from the 5d as well as from the 4f subshell. Okay, so every element possesses 3 electrons, loses 3 electrons and possesses +3 oxidation state, and it is very stable oxidation state in compared to other. Okay, due to this high charge, lanthanides have a great tendency to form complex compounds. Their compounds, in the compounds there will be unpaired electrons are present, so their complexes will be paramagnetic in nature. Okay students, now we are going to discuss about the lanthanide contraction. Do you know what is the meaning of contraction? Contraction का मतलब क्या होता है? The meaning of contraction is to shrink, सिकुड़ जाना, संकुचन हो जाना. Okay, whenever we move in lanthanide series from lanthanum to lutetium, then it is observed that there will be a continuous decrease, continuous shrink in the ionic or atomic radii. This continuous shrink of the ionic radii in the lanthanide series is known as lanthanide contraction. Look here, the ionic radii of lanthanum is 106 picometer, cerium 103 picometer, praseodymium 101 picometer, and continuously decreases up to 85 picometer. This
decrease in ionic radii of 21 picometer in lanthanide series is known as lanthanide contraction. ओके जब हम लैंथेनम से ल्यूटीशियम तक जाते हैं तो एक कंटिन्यूअस साइज में डिक्रीज देखते हैं. जो ये डिक्रीज हो रहा है इसी डिक्रीज को लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं, लैंथेनाइड संकुचन कहते हैं. नाउ व्हाट इज द कॉज ऑफ लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन? लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन की कॉज को पढ़ने से पहले वी शुड क्लियर द शील्डिंग इफेक्ट. शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है? इन मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ outermost shell never experiencing the actual attraction of the nucleus because the inner electron repel them towards outside. जितने भी एटम्स होते हैं उसकी आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन कभी भी न्यूक्लियस की एक्चुअल अट्रैक्शन को फील नहीं कर पाते क्योंकि उसकी अंदर की शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो उनको बाहर की ओर रिपेल करते हैं सेम चार्जेस की वजह से. तो ये जो प्रभाव है इसको कहते हैं शील्डिंग इफेक्ट. उनके इस रिपल्सन की वजह से आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के एक्चुअल अट्रैक्शन को कभी नहीं फील करते. दिस इज नोन एज शील्डिंग इफेक्ट. Okay, in case of lanthanides, whenever we move from lanthanum to lutetium, then plus unit charge increases gradually in the nucleus. One proton increases gradually, outermost shell electrons increases gradually, but the corresponding shielding effect is very very little because the f orbitals are so much diffused. Okay, so shielding effect is very poor. If shielding effect is very poor, then there will be a shrink has been takes place due to which the ionic radii will be decreased. It is the main cause of the lanthanide contraction. Now what are the consequences of the lanthanide contraction? इसके consequences क्या हो सकते हैं? ठीक है, the chemical properties, first is the chemical properties of the elements or ion depends upon the size of atom or ion. Greater the size of the atom or ion, greater will be ease to decrease to lose the electrons. Okay, and hence greater will be basicity. जितना साइज बड़ा होता है इलेक्ट्रॉन लूज करना उतना ही आसान होता है और उसकी बेसिसिटी उतनी ही ज्यादा होती है. So lanthanum hydroxide is most basic and lutetium hydroxide is least basic. Similarly, lanthanum oxide is most basic, lutetium oxide is least basic. So the basicity will be decreases from left to right due to lanthanide contraction. Okay, now the second part is the lanthanide contraction is more pronounced on post lanthanide elements. जितने भी lanthanum के बाद के elements हैं इन पर बहुत फर्क पड़ता है. इसको मैं आपको बहुत ही डिटेल्स से समझा रहा हूँ, बहुत ध्यान से देखिए इस चीज को जरा. जो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज होती है आपका स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, इसमें आप देखते हैं कि इनकी आयनिक रेडियाई 144 पिकोमीटर, 132 पिकोमीटर, 122 पिकोमीटर, आयनिक रेडियाई डिक्रीज करती चली आ रही है, एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज करती चली आ रही है. ओके, व्हेनेवर वी मूव इन द सेकंड इनर ट्रांजिशन सीरीज, जब हम सेकंड ट्रांजिशन सीरीज में आते हैं तो क्या होता है, शेल चेंज हो जाती है. ये आपका फोर्थ पीरियड है, ये आपका फिफ्थ पीरियड है, और अगर शेल चेंज हो जाएगी तो इलेक्ट्रॉनिक शेल बढ़ेंगे तो इट मीन साइज भी बढ़ जाएगा. हियर 144 पिकोमीटर, हियर 180 पिकोमीटर साइज इंक्रीज कर गया, 132 पिकोमीटर एंड हियर 148 पिकोमीटर साइज इंक्रीज कर गया, 122 पिकोमीटर, 146 पिकोमीटर साइज इंक्रीज कर गया. ओके, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक शेल इंक्रीज करती है नए पीरियड से. नाउ फॉर द थर्ड ट्रांजिशन सीरीज, whenever we see, then the size of lanthanum is 195 picometer. Here there is no electron in the f orbital, तो ये केस अलग है, तो 180 से 195 हो गया. लेकिन whenever we see the size of the hafnium, tantalum, tungsten, radium, then see 158 picometer, here size is also 158 picometer, 146 picometer, 146 picometer size. So there will be no change in the ionic radii. The ionic radii are almost same for the case of second transition series and third inner transition series. Here 139, also 139, here 136, 137. तो साइज में फर्क नहीं आ रहा है. आपका सेकेंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज में
जो ये पोस्ट जो लेंथेनाइड एलिमेंट्स आप देख रहे हैं इनके साइज में फर्क नहीं आ रहा है ड्यू टू लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। यहाँ देखिए बीच के सारे एलिमेंट गायब हैं। लेंथेनम 57 के बाद अगला एलिमेंट कौन है 72। तो ये जो बीच के सीरियम से लेकर के ल्यूटीशियम तक के जितने 58 से 71 तक के जितने भी एलिमेंट गायब हैं इनके लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन होने की वजह से यहाँ पर इनका साइज ऑलमोस्ट क्या हो गया सेम। तो ये भी इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सिक्वेंस है। द थर्ड पॉइंट इज due to small variation in the lanthanide contraction their chemical properties will be different and they will be easily separated by the fractional distillation method. Now the fourth consequence of lanthanide contraction, whenever we move from left to right in the lanthanide series the size decreases. If size decreases the density will be increases. The high densities of lanthanides due to lanthanide contraction. So these are the four important consequences. ठीक है। सेकंड कॉन्सिक्वेंस हमेशा याद रखिएगा कि पोस्ट लेंथेनाइड्स के साइज नहीं बढ़ रहे हैं। क्यों नहीं बढ़ रहे हैं? आपका थर्ड ट्राइम सीरीज में ड्यू टू लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। तो we have to discuss about three important properties of the lanthanides. First is the general electronic configuration. The general electronic configuration of the lanthanide is N-2F 1 to 14, N-1D 0,1 and NS2. This is the general electronic configuration of the lanthanide. The second thing was the oxidation state. They possess oxidation state from +2 to +4 in which the most stable oxidation state is +3. ठीक है। इसी तरह से they possess a regular decrease in the ionic radii from lanthanum 57 to lutetium 71 of 21 picometer. This decrease in radii is known as lanthanide contraction. Okay, lanthanides have a great tendency to form complex as well as actinides has also a great tendency to form complex, but actinide have more complex formation tendency in compare to lanthanides. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि actinides के cases में they possess oxidation state from +6 to +7 also. +2 से लेकर के +6 +7 तक oxidation state show करते हैं. Due to this high oxidation state they have great tendency to form complex compound in compare to lanthanides. Lanthanides or actinides, the complexes are generally paramagnetic in nature because they have unpaired electrons. Okay, the magnetic property is easy to explain in case of lanthanide but it is quite difficult in case of actinides. Okay, all the lanthanides are non-radioactive except promethium, but all the actinides are radioactive in nature. One more thing, बात खत्म करने से पहले एक बात हम और क्लियर कर दें. All the lanthanides occurs in nature, but all actinides are not occurs in nature. Only starting 4 elements of actinides are occurs in nature. These are actinium 89, thorium 90, protoactinium 91 and uranium 92. These 4 elements are occur in nature, but from neptunium 93 to lawrencium 103, these elements are man-made. They are synthetically prepared. These elements are called post-uranium elements. Okay, so students, मैंने पूरी कोशिश की आपको लैंथेनाइड्स के बारे में समझाने की. लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ऑक्सीडेशन स्टेट, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी थोड़ा बहुत मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सारा टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा. ओके, थैंक यू वेरी मच.